topic as head of the welcome. Yes. Good evening, everyone. I'm CS Nikhil Mulani. I hope you had a lovely session since the morning. I'm here with the topic, the new amendments in the V3 portal, that is, we call the version 3 of MCA. The previous version was the version 2 portal. The Ministry of Corporate Affairs aims to regulate corporate affairs in India. Works to protect investors and stakeholders by offering various crucial services. It is responsible for administration of the Companies Act, the LLP Act, as well as other allied acts and rules and regulations to regulate the functioning of the corporate sector under law. It also supervises all three professional bodies. MCA website serves as a gateway to provide all the information, guidance, and services related to corporate affairs. The new website of the MCA takes the corporate entities and professionals and citizens of India one ahead. MCA has revamped its existing website with new functions and ease of use layout. For the smooth functioning of the administration, MCA comes with the relevant changes and developments from time to time. So far, many changes have taken place in the MCA portal for the functioning of various registrations and filings. The MCA was providing facility of setting up a business in India, that is the Make in India concept, private limited company registration, one-person company registration, along with certain procedures to to register a new company in India through the version 2 portal. However, various amendments were made by ministry from time to time to bring out important changes in the company formation procedure in India. Recently, the ministry has introduced new portal for with the new facilities of web-based services for the LLP and has lined up the similar process of web-based services of company that is going live on the 31st of August this year. In MCA version 3 portal will be mainly two groups user, a registered user and a business user with specific number of user roles. If we talk about the first user role, that is the registered user comprises of individuals with access to the basic services of MCA portal, such as ebook, e-consultation, master data services, view public document services, and filing of complaints. In the LLP module, such person will only be able to file the run forms and the fill up forms. The second comes the business users. The most of them used is the professional user. This professional category comprises of a company secretary, chartered accountant, or a cost accountant. They will be able to access all the MCFO services for any company or LLP. The professional user will not be required to obtain any authorization from the company. In addition, all the basic services available to the registered user will be available to this user also. For the registration, PAN will not be a mandatory in the user registration of a director, whereas DIN will be a mandatory thing. There will be new validation system which allows only one login registration per PAN ID, one email ID, and one DSC association for a director. Every letter will now automatically become a capital letter and no special character is required. For a professional, process will remain the same. The PAN COP institute name and the membership name is to the PAN data, or otherwise it will show an error there and then on the same very page. Now the method to login. The user will first proceed to the sign in or the sign up link on the top right corner of the MCA portal. On clicking the login icon, on the left hand side of the MCA portal, two separate icons will be shown. One for the LLP login and the other for the company login. As soon as you log in on the LLP login, you will be redirected towards the LLP page. Here, users can use their existing login credentials.
The user must choose the LLP option or the company login depending upon the nature of the entity they need to work on. After successful login, users will be able to fill out LLP or the company forms by utilizing the various options. Now the method to fill the forms. At the right hand, sign in on the sign up option. There need not be to make a new login ID. They can only switch to the existing from the existing ID to a business user ID. The user is required to use the profile update option will be shown in the right hand top of the MCA portal. The user must update his profile as a business user and fill the necessary details to complete the profile. After successful updating the profile, the user will again log in into the portal and the user will obtain the OTP on the enrolled number and the email ID. After submitting the OTP, the user will see all the web forms available in their login and ready to file the forms. Another improvement brought while being logged into the portal is that the session will expire after 5 minutes of activity before being logged off, whereas there was no inactivity time reported in the version 2 portal, and the user was logged off without any intimation leading to the loss of data, except for the Spice Plus forms. The version 3.0 is seen as a game changer for MCA, as it would be able to use the latest technology tools available through this module to get a good handle on the extent and the quality of compliances made by corporate India. While presenting the budget for 2001-2022, our Finance Minister and the Corporate Affairs Minister, Nirmala Sitharaman said the government would use the data analytics, artificial intelligence, and machine learning to launch the MCA21 Portal 3.0. This project is and learning, what we call AI ML technology. Now, the object of the website. It helps the business community to register a company and file statutory documents quickly and easily. It provides easy access to the public documents, provide faster and effective resolutions to the public grievances, provide registration and verification of charges easily. It ensures proactive and effective compliance with relevant laws and corporate governance. It also enables the MCA employees to deliver best of the breed services. Now, what are the advantages of the new portal that the government has just rolled out on 31st of August? In the MCA version portal 2, forms are required to be filed and uploaded in this portal, while in the version 3, the forms are to be filed online. This upgrade in the MCA version 3 portal enables the user convenience, including the ease of easily saving the form on the portal itself and resume whenever the stakeholder comes back to it. The form comes with most of the information being pre-filled, which is picked from the previous entered information, which avoids duplicacy of work. The real-time validation, as soon as the information is filed, the system will do the validation immediately. If there is any error, user does not have to wait for the pre-scrutiny error, as the same is displayed on the very same page. The forms can be easily saved on the portal itself and resumed there and then. One more update, the size of the attachments have been increased from 6 MB per form including DSC to a 10 MB form including DSC. The Philip form has been brought at parity with the Spice Plus form that we used to file for the company, with PAN and TAN being issued along with a certificate of incorporation, which was not the case in the version 2 portal. Also, the validity of the SRN has been increased from 7 days to 15 days on the web portal if no action has been taken in respect of the same. The portal. Also, many partners can be added in the Philip during the operation of the LLP. The NIC code for newly incorporated LLP has been shifted from NIC 2004 to 2008. Also, the necessary attachments that were required to be attached earlier to the form have been done apart and included in the form itself. Now, just talking about the AI/ML technology, the compliance management module will be able to run data analysis and the AI checks and flag out the non-compliances, if any. With information collected from other departments, the AI shall work to flag the shortcomings on its own, and the internal users will not have to do a lot of manual exercise to improve the compliance from the external shareholders. The government is leveraging technology to improve ease of doing business by removing and minimizing the compliances required from the stakeholders and to promote corporate governance from Indian corporates. So the government has linked certain forms like Form 3, Form 4, and Form 5 of the LLP have been linked together, which can be filed either as a linked form or a standalone form.
The filler form has already merged the form 9, 17, and 18, thereby enabling quick filing from mere click of a button. Integration has been done with the trademark authorities for name check facility in the run form for the comfort of the and awareness of the stakeholders. If a user tries to reserve a name, system is able to flag and give certain observations whether similar name exists or not as compared to the V2, which helps the stakeholders to get the name corrected there and then, thereby curbing the time of incorporation. Feature which allows one to view all the forms filed by them to date, along with the status of the form, such as pending for DSC upload, under processing, pay fees, pending for resubmission, etc. Now just talking about what the government aims by launching this B3 portal. The chief purpose of the portal is to ensure seamless integration and data exchange among regulators. For the same purpose, a revamped website with an e-book facilities was launched back in May. For the data analytic driven system, as the ministry described inventory to turnover or loan to assets as early flags just to follow by. With the help of Central Scrutiny Center, the government will be able to pull up companies where they detect any suspicion. The salient features of the MC21 version 3 are e-scrutiny, e-adjudication, e-consultation, compliance management system, and MCA lab of corporate experts. The e-book has been revised to include e-books for all administered by MCA. Further, additional functionalities such as filter, sorting, and timelines have been introduced. Now, previously, with the launch of the version 3 for LLPs, the portal was completely shut down for a few days, leading to a loss of business with no incorporations taking place. Also, the portal saw a sudden breakdown after the launch, causing hassle to the stakeholders in managing their activities on the portal for quite some time. In order to overcome the previous experience, the government has not done this for the company this time. This time, the MC has issued an approach for company module, set 1 forms, which includes an initial of 9 forms as per the data. These 9 forms constitute approximately 34.56% of filing count based on the FY 2020-21 filings. The 9 forms include all the forms related to the charges, the director KYC forms, and the deposit forms. Why has the government done this? This will allow testing of company module with migrated data before the big bang goes live. The volume of data being fairly large, it will allow to test the capacity of the upcoming version 3 portal for the companies. It will also allow the master data updates for charges and also all the trend to be get tested. Now, to keep the hopes high with the upcoming version of our very own MCA portal, we look forward to be more familiar with the portal as and when the same is revamped. Thank you. Thank you. It was indeed a very good information about the new portal of MCA. Today, when we practice in our office, we have 2 challenges, one of law and one of technique. Now, moving ahead, we are privileged that Dehradun branch has got, the family of Dehradun branch of Chartered Accountants has got bigger with induction of 20 Chartered Accountants as newly qualified Chartered Accountants. So Dehradun branch and all the members of the branch, welcome them all to this branch. This branch is yours. You are a part of this branch, and we feel highly honored and privileged to felicitate you all today. Before starting the felicitation, I just want to take 2 minutes of everybody here, even those like me, Rajesh sir, who are very more senior, Pawan sir, chartered accountant. ये तो शब्द नहीं है, ये एहसास है हम सबके जीवन में। सब 1 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए आंख बंद करके अगर 2 चीजें सोचेंगे, पहली वो, आज मैं 2005 में क्वालिफाई हुआ था, 17 साल पहले,
लेकिन आज भी मुझे वो मोमेंट बिल्कुल पिक्चर्स क्यों याद है, जिस समय मैंने अपना फाइनल का रिजल्ट देखा था। और मैं उसमें नंबर तो हम कोई देखते ही नहीं है उसमें, हम तो बस नीचे की चार अल्फाबेट देखते हैं, फेल और पास। नंबर तो शायद ही कोई देखता है, उसके बाद देखते हैं। तो जब मैंने उसमें पास देखा, तो वो जो पिक्चर्स क्यू व्यू था, कि मेरा जो रिएक्शन था, वो मुझे आज तक याद है। और मुझे लगता है कि शायद हम 50 साल पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो जाएंगे। आंख बंद करके वो व्यू हम सबके जहन में, बिल्कुल हमारे दिल में बसा हुआ है, बसा रहेगा। तो ये वो एहसास दिलाता है कि ये दो शब्द कितने कीमती हैं। दूसरा एहसास कि अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते, प्रैक्टिस के दौरान, आप लोग नए हो, प्रैक्टिस भी करोगे, जॉब में भी जाओगे, स्ट्रेस भी होगा, परेशानियां भी आएंगी, हम सबको आती है। एक स्टेज कभी कभी ऐसी भी आती है कि लगता है यार मैंने क्यों किया, मैं कुछ और कर लेता। ऐसा होता है। और ये हमारा इस प्रोफेशन में, डॉक्टर होगा वो भी यही सोचता है कभी कभी कि यार मैं डॉक्टर क्यों हूं, मैं कुछ और होता। इंजीनियर सोचता है यार मैं इंजीनियरिंग की, आईटी कंपनी वाला सोचता है मैं रात के 11 बजे तक क्यों काम कर रहा हूँ। ये सभी के साथ होता है। लेकिन उस वक्त अगर हम सोचे कि रिस्पेक्ट भी कमांड इन द सोसाइटी, द पोजीशन वी होल्ड financially as well as the reputation wise in this society is because of only these two words, chartered accountant. And we are still in a country of about 140 crores, not even in crores, we are nearly I think 4 5 lakhs or 6 lakhs, I do not know the exact figure, 4 lakhs. So in a country of 140 crores, near 4 lakh chartered accountants who are holding the economy of this 140 crore. We are going to become the world's third largest economy. We are at present, I think, fifth largest economy. So it is a tremendous and commendable achievement of all of us. So with these words, I congratulate you all for being qualified to this noble profession. Now, beginning the felicitation, I request our guest speaker, CA Pushpinder Dixit ji, to kindly felicitate our newly qualified chartered accountant. CA Akshat Garg ji. CA Prachi Srivastava. CA Sunmeet Singh Vasudev. I think he is not here. CA Ramneet Kaur. Thank you, sir. Now I request Chairman of Dehradun branch to felicitate CA Paras Gupta ji. CA Hargun Singh Anand. Thank you, sir. Now request CA Pawan Agarwal ji to kindly felicitate the new chartered accountants. CA Sanmet Singh Vasudev. CA Anshika Agarwal.
CA Hitaishi Bhatia. CA Shaban Dhakre. I think he's not here. CA Srishti Bhardwaj. Thank you, sir. Now I request our guest speaker. Now I request Amit Mohanji to kindly felicitate. CA Karan. CA Jaki Mansoori. CA Sonal Makin. Now to find out. CA Ashar Pawar, sorry. CA Prakhar Jain. CA Yashasvi Agarwal. Now I request our past chairman of Dehradun branch, CA Rajat Sharma ji, to kindly felicitate the new chartered accountants. CA Jesu Seth. CA Shivang Bartwal. CA Jatin Chopra. Thank you, sir. Thank you. Now I request all the eminent speakers, chairmen, to kindly grace the dais, please. Indeed, it was a very mind-opening session, as I said earlier, and particularly, we all thank our speakers who have taken out their precious time, because time is the most precious thing as on date, and they have taken out their precious time
to enlighten us all. As a token of love, we are presenting memento to you, sir. I request C. Jasmeet Chaudhary, ji, Secretary, Dehradun Branch, to kindly present token of love memento to our guest speaker, C. Pushpinder Dikshit. Ji. Thank you, sir. No, 94 hours. Below 20,000. Sir, it is not on the business. Now I request C. Rajesh Sharma ji, Part Chairman, Dehradun Branch, to present memento to C.S. Nikhil Gulati. We also have token of love for our first speaker of today's full day seminar, C.A. Deepak Bolusurya, but right now he is within in a virtual conference. So I think he will get free by about 30 minutes later. So by this, I hope you must have enjoyed the full day session. Thank you all. Thank you, sir. And sorry, one thing more. I forgot the thing. Official vote of thanks to be given by the chairman of the Dehradun branch. I request Sri Rajesh Gupta to kindly propose the vote of thanks. Thank you. Thank you very much. बेसिकली क्या है ना सर, आवाज मेरी बुलंद है तो बाहर तक आ जाती है, तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे। वोट ऑफ थैंक्स मैं एक्चुअली लंच से पहले दे रहा था, मेरा एक क्वेश्चन लग गया था, वो क्वेश्चन हुआ नहीं पूरा भी सर इसी में, तो मैं अभी आपके सामने पूछ नहीं पाऊंगा। मे बी another 15-20 minutes he'll be free and then I'll definitely ask that question, and maybe वो शेयर होता है नहीं होता, I don't know, but I'm so much happy that we have got 20 new chartered accountants. We have grown from 500 to 800 plus in just a matter of 4 years, and we are still growing. And I see so many girls over here, right sir? Now I think girls are more into chartered accountancy profession as compared to boys, and I do have also girls in my office, and I 100% guarantee that as compared to boys, please don't mind, huh? As compared to boys, girls are much more sincere in their attitude, in their working. 3 cheers for new girl chartered accountant. Nitin, तीसरा नहीं हुआ, तीसरा बॉयज से करेंगे। आपने क्वालिफाई कर लिया, now the struggle starts because आपने इंडियन टीम देखी है ना, क्रिकेट टीम, कितने लोग होते हैं सर? 11, और कौन होता है एक और? 12th मैन। इंडिया में आप आईपीएल खेल सकते हैं, कौन कौन सी टीम से सर प्लीज बताइए ना? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स, वी हैव गॉट सो मेनी टीम्स। You can play in all those teams, but वहां पर पहुंचने के लिए क्या है? You have to start from the scratch. You have to start from the book. So हम book से start करते हैं, पढ़ते हैं, then we play Ranji and all, जो 5 days cricket. Then we are selected from that Ranji to IPL, and then we need selection in Indian cricket team. So that's the challenge. So now you are in IPL, and now you have to get selected into Indian cricket team. And Indian cricket team में कैसे select होंगे? Once you do your profession dedicatedly, don't deviate from the methodologies, what we call principles, जो मैंने बोर्ड में लिखा है बाहर, excellence, integrity and independence. So we have to follow the 3 principles, and only then we'll be selected for Indian team, because our objective is that we should be selected for Indian team. ठीक है? So मेरा ये कहना है, मैंने जब स्टार्ट किया था
when I started my profession, अभी रोल में ये बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में आपको पेमेंट नहीं मिलती. देखो सर, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट. जो स्टार्टिंग आप करते हैं, स्टार्टिंग में पेमेंट नहीं मिलती, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वर्क vis-a-vis पेमेंट दैट यू आर रिसीविंग. सपोज अगर आपको पहले साल टैक्स ऑडिट करने, सपोज 2000 रुपीज आपको मिल रहे हैं, 3000 मिल रहे हैं, 4000 मिल रहे हैं, डू दी वर्क बट विथ ऑल आईज एंड ईयर्स ओपन. डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी. You will start with 2000, but it will be converted to 2 lakh rupees, maybe 20 lakh rupees, because we have got so many chartered accountants who are charging 20 lakh rupees also for a year, based on the 3 words: excellence, integrity, and independence. So my humble request to all the chartered accountants who are the torch bearers, future chartered accountants, I'll say, because FCA stands for fellow chartered accountant, but I'll say you are all future chartered accountants. So please carry the flag of the profession in right perspective and take it to the heights that it had been earlier. Thank you. Thank you. Thank you. हाँ बिल्कुल सर, आइए ना प्लीज, मोस्ट वेलकम. राजेश भाई ने जो कहा कि अगर आपको 2000 मिलते हैं तब भी आप काम करिए, लेकिन वर्क से कंप्रोमाइज मत करिए. मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप ऐसा करें, शायद ये चल रही. इससे तो अच्छा है कि आप किसी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एसोसिएट होइए, उनसे पार्टनरशिप करिए. आपको 40% भी मिलेगा तो भी आपके लिए वो बहुत होगा, क्योंकि वो आदमी कम से कम एक ऑडिट फीस के 10,000 रुपये चार्ज कर रहा होगा. और खाली आपको 4000 नहीं मिलेगा, बल्कि वो कुछ सीखने को मिलेगा. मैं जिस समय सीए बना था, मेरी उम्र मात्र 22 साल थी, 22 साल भी शायद हुई नहीं थी, और मैंने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस अपने शहर में करनी थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ पार्टनरशिप, केवल इसलिए कि अगर कुछ भी खराब होगा तो मेरे साथ में कोई एक ऐसा छत्र होगा जो हर चीज संभाल कर देता है. तो अगर आपको करना ही है तो आप किसी लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपकी अगर सामंजस्य बनता है तो आप उनके साथ काम करिए, नहीं तो किसी बाहर की फर्म से उनकी ब्रांच डालिए, लेकिन काम क्वालिटी का करिए. ये ज्यादा अच्छा आपके प्रोफेशन के, अपने प्रोफेशन के लिए होगा, बजाय इसके कि हम अपने लिए गड्ढे खुदवा रहे हैं कि जो क्लाइंट आज 10,000 रुपए दे रहा है, एक नए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके वो 2,000 और 4,000 में काम कराएगा. इससे प्रोफेशन का डिमोशन होता ही होता है, और इस चीज को हम लोग भी झेल रहे हैं. हम लोग बिल्कुल प्रोफेशन से बाहर होते जा रहे हैं, ठीक है ना, केवल इसी वजह से, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन उनको विजडम का फायदा नहीं मिलेगा. आज हम लोग विजडम दे सकते हैं. सर मैंने जो कहा ना, सर एक्चुअली सर ने उसे मॉनेटरी टर्म्स में काउंट कर लिया. जो मैं कहना चाह रहा था, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड. मेरा ये कहना था कि आज मैं कम पैसों में भी काम कर रहा हूँ, सर को अपने दरवाजे तो 5,000 रुपए है, या तो मैं 5,000 लूंगा और या नहीं लूंगा, लेकिन काम प्रॉपर करूंगा. क्योंकि क्या होगा ना, आपने एक बार काम ढंग से किया, नेक्स्ट टाइम वो आपको खुद 5,000 देके जाएगा, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है 10,000 लेकर के जाए. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूंगा मेरी लाइफ का. मेरे पास एक पार्टी थी जिसका मैं इनडायरेक्ट टैक्स का काम करता था. उन्होंने मेरे को बोला, राजेश आपने मेरा टैक्स ऑडिट भी करना है. ठीक है सर, कर लेते हैं. ना उन्होंने बात करी ना मैंने बात करी, उन्होंने मेरे से ऑडिट करा लिया, मैंने ऑडिट कर दिया, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी. ठीक है सर. अब वो मेरे पास आए, बोले राजेश जी फीस बताओ. तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा सर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप मेरे रेस्टोरेंट में आए, आपने मेरा मेन्यू कार्ड नहीं देखा और आपने खाना खा लिया. Precisely I use the same words. मैंने कहा आप मेरे, now it is up to me, whatever I can charge you.
जिसे कह सकते हैं कि खुश हो गए मेरे से पहुंचा रहा हूँ आज से आई थिंक 2007 की बात होगी, ठीक है जी। और उस क्लाइंट ने मुझे आगे फर्दर ट्रेल दी पूरी क्लाइंट्स की। उसने मुझे बोला कि यार इसके पास जाओ, क्योंकि ये कम से कम आपसे अननेसेसरी बार्गेन नहीं करेगा, और दूसरा ये कि ये पर्सन फेयर है। अगर ये चाहता तो उस दिन मुझसे 50,000 मांगते, मेरे को देने पड़ते, बट उसने ना बोला मुझे फॉलो करो, बट यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ, बिकॉज़ दिस इज ओनली एन एग्जांपल वेयर वी कैन एक्सेल। सपोज मैं उसको बोलता है मुझे 50,000 रुपए दीजिए, वो 4 महीनों को बोलता है इसके बाद मत जाना, बट he himself gave me 21,000 rupees check plus service tax, because service tax मैं charge करता था, and then he gave me so many clients. So this is the way we can excel in our profession. सर भी आ गए हैं सर, बहुत अच्छी बात है सर। आपका सर प्लीज एक मिनट प्लीज, आइए सर प्लीज Thank you, sir. ये Deepak Bolusoria ji, his deliberations on tax audit, they were really very enlightening. We thank you, sir, for that. As a token of love, I request CA Sahib Anand ji to kindly present memento to CA Deepak Bolusoria. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू रमन। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन रह गया था। हाँ मुझे पहला क्वेश्चन मुझे में पूछा था आपने। देखो सर, ऐसा ना, मैंने एक बात हमेशा मानी है सर कि जब आपके पास ज्ञान का समुद्र हो तो उसमें से एक आध बाल्टी एक्स्ट्रा निकाल लेनी चाहिए। सर हम तो वो वाले आदमी देखते नहीं, लेके जाते थे। सर वो तो देखिए सर, वो तो सिंपल सी बात है, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। वो कहा गया है, ना तो राजा चुरा सकता है, ना चोर चुरा सर सकता है। आपने जब आपने ओशन का एग्जांपल दिया तो आज तो ग्लोबल वार्मिंग भी चल रही है, पानी सूख भी जाता है। सर हम सुख भी नहीं देंगे। जी सर, एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन था सर कि जब हम अपना क्लॉज 44 में वैल्यूज रिपोर्ट करेंगे तो कुछ तो ऐसी वैल्यूज होंगी सर जो कि हमारे पे ऐसी होगी जिसका हम जीएसटी का आईटीसी ले चुके हैं, और कुछ ऐसी वैल्यूज होगी जिसका हमने आईटीसी नहीं लिया होगा बिकॉज़ इट इज ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। तो फिर उसको उनको चार्ज कर दिया आपने ना? हां जी, हां जी। अभी ये क्वेश्चन अभी 2 मिनट पहले आंसर किया है, खुद ही बनाया मैंने, बताइए और कुछ क्वेश्चन बताइए। बस यही है सर, इसका आप आंसर दीजिए। सर आप बताइए, मैं इसमें 3 सिचुएशन लेके चलता हूं। सर वही तो सर पूछ रहे हैं आपसे। एसएससी आप जिसकी ऑडिट कर रहे हैं, नहीं है नहीं है। एक एसएससी है जिसकी आप ऑडिट कर रहे हैं, राइट? एसएससी रजिस्टर्ड है, एसएससी अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है, एग्जाम सप्लाई है, रजिस्टर्ड है, एग्जाम टैक्सेबल सप्लाई है। तीनों सिचुएशन में आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सारे इफेक्ट डिफरेंट होंगे, राइट? रजिस्टर्ड है, टोटली टैक्सेबल है, आईटीसी क्लेम नहीं करा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को चार्ज कर दिया। अनरजिस्टर्ड है, कोई आईटीसी मिलेगा नहीं, सारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट को चार्ज कर दिया। मैं पहले केस लेता हूं अनरजिस्टर्ड का सर। अनरजिस्टर्ड है क्योंकि आईटीसी मिलेगा ही नहीं उसको, पर रिपोर्टिंग तो मुझे करनी है। तो लेट्स से प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर आ रहा है 1 करोड़ 18 लाख रुपए और 2A में आ रहा है 1 करोड़ प्लस 18 लाख रुपए। तो आपके हिसाब से क्या रिपोर्टिंग होनी चाहिए? बस आंसर आपको पता ही तो है। तो व्हाटएवर इज द अमाउंट व्हिच हैज बीन डिस्क्लोज्ड अकाउंट विल गो इनटू दैट। तो चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो। चलो अब एक और सवाल है, अभी वेबिनार में किसी ने पूछा, सवाल पूछा उसने 44 के संदर्भ में था, लेकिन बैठे बैठे मेरे दिमाग में खुराफात चलती रहती है। अच्छा इसको ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा? तो उसका सवाल ये था, सर मेरा एक एसएससी है जो एग्जाम्प्ट सप्लाई में भी डील करता है और टैक्सेबल सप्लाई में भी डील करता है, ठीक है जी? यानी कि उसकी जो आउटपुट सप्लाईज है वो टैक्सेबल भी है और एग्जम्प्ट भी है। लेकिन 2A में जो आइटम्स आ रही हैं वो सारी इन रिलेशन टू एग्जम्प्ट है।
वो सारे इन रिलेशन टू एग्जाम्प्ट है। यानी कि अगर मैं रूल 42 रीड विद सेक्शन 17 पढ़ता हूं तो वो कोई भी आईटीसी मुझे मिलेगा नहीं। सवाल आएगा सर इसका मैं क्या करूं? तो मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपने क्या किया होगा, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या किया? मैं सिर्फ टुडे को देख के तो नहीं बता सकता ना, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या किया? उसने कहा सर एक्सपेंस किया। मैं फिर क्या दिक्कत है? अभी तो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करा था। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं अगर मैंने, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, इसको ट्विस्ट कर देते हैं। चलो, अब एक्सपेंस तो करना था, हमने एक्सपेंस करा नहीं है, अब क्या करूं? अब आप मुझे आंसर करो। अब इसमें मेरा क्लॉज 44 भी आ गया और मेरी ऑडिट भी आ गई। क्लॉज 44 ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्लॉज 44 तो बड़ा छोटा सा है। रियल ऑडिट में क्या करेंगे हम, आप बताइए। What should you do? What should you do with the audit? What should you do with the book? रिवर्सल ऑफ आईटीसी तो होगा ही होगा, आप क्या करोगे? एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे? यही तो सवाल है। आप तो होगा नहीं, आप कराओगे क्या, आप करोगे क्या? इंपॉर्टेंट ये है, क्या एक्शन होने चाहिए आपके, या क्या क्या एक्शन होने चाहिए आपके एसएससी के पार्ट पे। और अगर वो नहीं करता तो आप क्या करोगे? अगर वो नहीं करता तो आप क्या करोगे? जरूरी तो नहीं है कि आपने जो कहा एसएससी वही करेगा ही करेगा। अभी थोड़े दिन पहले मेरी किसी क्लाइंट के साथ बहस हो रही थी, एनजीओ की हम ट्रस्ट की ऑडिट कर रहे हैं, तो उसका एक इशू आया, उसने किसी और ढंग से डिस्क्लोज करा था। मैंने कहा नहीं, आपकी ट्रस्ट डीड के जो प्रोविजन है वो कुछ और कहते हैं, राइट? मैंने कहा आप चेंज करो। कहता सर आप तो नहीं बता सकते चेंज करो। उसने ये बात वर्ड यूज की है मेरे सामने, सर आप तो नहीं बता सकते चेंज क्या करना है, तो मेरी बैलेंस शीट है। कोई बात नहीं, ऑडिट रिपोर्ट भी मेरी है, बैलेंस शीट तेरी, ऑडिट रिपोर्ट मेरी है। You do whatever you want to do with your balance sheet. I will do whatever I want to do with my audit report. तो उसको समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं। भाई तू चेंज कर ले, नहीं तो क्वालिफाइड रिपोर्ट ले। तो मेरा सवाल यही है आपकी, या तो क्वालिफाइड रिपोर्ट आएगी, और अब क्वालिफाइड रिपोर्ट आती है फॉर एग्जांपल, तो क्या क्वालिफिकेशन आएगी? आईटीसी एक्सेस क्लेम दिया, ठीक है, और सर क्वांटिफिकेशन भी देनी पड़ेगी आपको। क्या क्या क्वांटिफिकेशन दोगे आप? पहला, एक्सपेंडिचर हैज बीन अंडरस्टेटेड। सेकंड, प्रॉफिट हैज बीन ओवरस्टेटेड। थर्ड, एसेट्स हैव बीन ओवरस्टेटेड। फोर्थ, लायबिलिटीज हैव बीन अंडरस्टेटेड। क्यों नहीं होगा सर? आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, आईटीसी मिल रहा था क्या आपको? अगर आईटीसी एडजस्ट कर लिया तो अलग है, तो भी मेरी अलग है सिचुएशन। फिर मतलब आपको उस हिसाब से सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। आपको पहले बैलेंस शीट वैसे बनानी पड़ेगी जैसे बननी चाहिए थी। अगर वो नहीं करता तो मेरी पोजीशन क्या आती? तो आपको वो पोजीशन निकालनी पड़ेगी, क्या उसने पोजीशन ले रखी है वो निकालनी पड़ेगी। फिर दोनों को आपको डिफरेंशियल लगाने पड़ेंगे। सिर्फ यही तक कहानी खत्म नहीं हो जाती सर। आपने जो कि एक्सेस आईटीसी क्लेम करा है विच वाज इनएलिजिबल, उसका टैक्स भी तो आएगा, उसकी पेनल्टी भी तो आएगी, उसकी क्वालिफिकेशन भी आएगी। तो तरीका जो बनता है मेरे हिसाब से वो ये था कि आप उसको बोलो कि भैया डीआरसी 03 जमा करा, डीआरसी 03 जमा करा इमीडिएटली विद इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का आपको प्रोविजन डालना है, प्रोविजन डालना या अक्रूड लायबिलिटी जो भी आपको उसमें नहीं जा रहा है। और चूंकि आपने जब इंटरेस्ट और आपने जब बुक्स रीस्टेट करवाई दी है तो ऑटोमेटिकली वो पीएल का पार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो पीएल का पार्ट हो जाएगा। सो एवरीथिंग हैज टू बी रेफरेंस टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एक, अब चूंकि अपने बात चली रही है तो एक और भी क्वेरी पूछ लेता हूं आपसे। एक एसएससी की टर्नओवर 90 लाख रुपए की है विदाउट जीएसटी, और इंक्लूडिंग जीएसटी है 1 करोड़ 2 लाख रुपए की। टैक्स ऑडिट होगी या नहीं होगी? क्यों? How can you say that? Where it is written that it has to be excluding GST only. नहीं, मैं कुछ नहीं बता रहा था, आप बताओ। That's a liability. मतलब that is not a part of turnover. And वो जो हमारी जो turnover limits हैं, that is totally based on the turnover. एग्रीगेट रिसिप्ट की बात करते हैं। मैं एग्रीगेट रिसिप्ट की बात कर
एग्रीगेट रिसिप्ट मैं सिर्फ 44 एबी की बात कर रहा हूँ, टर्नओवर की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस रीडिंग फॉर द पर्पस ऑफ 44 एबी की बात कर रहा हूँ। विल इट इंक्लूड जीएसटी और नॉट? इट विल इंक्लूड विल इट इंक्लूड जीएसटी और नॉट? हाँ जी, मैं आपको एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखा सकता हूँ जहाँ पे 1 करोड़ 2 लाख रुपए ही दिखा रखा है। सर इंक्लूड भी हो सकती है, एक्सक्लूड भी हो सकती है। It is, you see, turnover is a commercial concept. It is dependent on method of accounting. Sir, 1 करोड़ 2 लाख हो जाएगी. If you are maintaining books of account basis, 2 year basis. यूं तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि books of account have to be maintained on exclusive method basis. But what if वो कहता नहीं भाई मैं 145 में क्यों जाऊं, मैं तो inclusive method फॉलो कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? ऑडिट तो हो जाएगी पर क्वालिफिकेशन क्या आएगी? Sales have been overstated. सॉरी, Sales have been overstated. सेल्स हैव बीन ओवरस्टेटेड। सर आप 102 का ऊपर लिख आप सिंपली ये लिखोगे द एसएससी इज नॉट फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 या जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिकॉज़ ही इज फॉलोइंग द इंक्लूसिव मेथड। ओवरस्टेटिंग का गलत थोड़ा ना डिस्क्लोज किया उसने कोई। आप ये बता सकते हो कि अगर एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव होगा तो उसका इसका इंपैक्ट क्या है, आपको इंपैक्ट निकाल के बताना पड़ेगा। सर अगर इंक्लूसिव मेथड ना फॉलो करके एक्सक्लूसिव मेथड फॉलो करते हैं तो 145 में यस करते हैं नहीं करते? अच्छा अगर 145 में यस भी करते हैं और ले तो कि 90 लाख की थी जी, 90 लाख की थी, ऑडिट भी करा ली बात में 4480 में था जो भी था ऑडिट हो गई। अब जब आप फॉर्म 3CD में आओगे वो पूछता है ना कि 145 में सर, मतलब वहां तो लोगों ने 9 तक भी लिख रखा है। नो तक भी लिख रखा है, एक्सक्लूसिव से बन रहे हैं, नो तक भी लिख रखा है। यस में लिखना है और आपको ब्रेकअप भी देना है सर, चाहे वो अल्टीमेटली जीरो ही क्यों ना हो। यू हैव टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरी लाइन आइटम। सेल में इतना चेंज है 70 पेज में, रेलेवेंट सिर्फ 8 पेज है। हर क्लॉज के एंड के अंदर उन्होंने 4-4 3 जितने भी ऑब्जर्वेशन मेन ऑब्जर्वेशन है जो नॉन कंप्लायंट है उन्होंने बता रखा। जैसे मैंने ऐसे 700 की बात करी थी, ऐसे 700 के ऊपर पूरा पैरा है। एड्रेसेस के ऊपर पैरा है कि एड्रेसेस आप बताते हो कि एड्रेस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है, लेकिन आपने तो बताया नहीं रखा कि कंप्यूटराइज्ड है नॉन कंप्यूटराइज्ड है, किस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हैं ये नहीं बता रखा आपने। अगर वो क्लाउड में बुक्स है तो उसका आईपी एड्रेस नहीं दे रखा आपने। रजिस्ट्रेशन की बात करी, कुछ रजिस्ट्रेशन जो है वो कहता है भैया एसएससी का पैन ए है, रजिस्ट्रेशन में पैन बी आ रहा है। कुछ इंफॉर्मेशन आपकी ऑडिट रिपोर्ट में आ रही है कुछ और है, आपकी जो मेन और रिपोर्ट है वहां कुछ और आ रही है। क्लॉज 34 एंड क्लॉज 21 आपस में कोई मेल नहीं है आपस में। ऊपर आप कह रहे हो ये 40 में डिस्क्लोज है, मन में कुछ नहीं बता रखा, तो क्रॉस चेक तो कर लो। ये कुछ एक चीजें सर जो मेन है हम सबको काम की, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया ये वाला 145 है। तो आप स्टडी पढ़ेंगे, स्टडी के अंदर उन्होंने क्या किया, क्लोज के बाद में हाइलाइटेड बॉक्स बना रखा है 3 पॉइंट 4 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट, मैक्सिमम तो स्टडी में क्या लिख रखा है कि इस क्लोज की रिक्वायरमेंट क्या है, गाइडेंस नोट की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। और फाइनली उसने बता दिया अच्छा यार ये नहीं कर रहे, अच्छा ये नहीं कर रहे, अच्छा ये नहीं कर रहे, अच्छा ये नहीं कर रहे। तो वो है, अगर आप उसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वो एक सरसरी ग्लैंस मार लोगे आपको वहीं पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो मुझे देखने हैं, देखभाल रखनी है ताकि मेरी रिपोर्ट में गलती ना हो। नहीं वो तो टैक्सेशन ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है, उसका नाम है TAQRB। तो अगर आप रिसोर्सेज में जाएंगे, पब्लिकेशन बाय अलग अलग कमेटी का ऑप्शन है, तो उस कमेटी में जब आप जाएंगे तो टैक्सेशन ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में जाएंगे तो उसमें आपको वहां को पब्लिकेशन मिल जाएगी आपको जून 2022 के अंदर आई। पहले एक चेकलिस्ट के नाम से आई थी, चेकलिस्ट में भी उन्होंने ऐसे 700 का रेफरेंस दिया था। उस चेकलिस्ट में भी ये बताया क्लॉज के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेना है, वो तो 150 पेज की है चेकलिस्ट जो।
हर क्लॉज के साथ ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जैसे ऑडिट प्रोग्राम नहीं होता लाइक दैट। लेकिन ये क्यूआरबी की ये स्टडी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, 70 पेज कहने को है, जो क्रक्स है वो 6-7 पेज में ही है, इससे ज्यादा नहीं है। और 6-7 पेज में जरूरी तो नहीं है कि सारी क्लोजेज आप पर एप्लीकेबल हो, जो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप एक बार नजर मार लीजिए उसके ऊपर। थैंक यू। Thank you. सर आपने बहुत ज़्यादा हमारा नॉलेज लेवल बढ़ाया आज, मतलब एक बाल्टी हमने और निकाल ली। तो अब मैं सर अपने सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि फाइनल वोट ऑफ थैंक्स वो करते मेरे किए गए थे। आइए सुशील जी प्लीज, क्योंकि मैंने 2-3 बार वोट ऑफ थैंक्स करने यहाँ पर आ गया, मगर मेरे वोट ऑफ थैंक्स हमेशा क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो गए। तो फाइनली जसमीत जी प्लीज आई So thank you very much. A big thanks to our speakers, Dikshit sir and Deepak sir, who've come all the way. And this is the kind of a pro bono service that you people give to the profession. So we are so very thankful for that. We so thankful for us. So it has been, I would say, a gala seminar, and it took us the entire day. And of course, we also, sorry, I forgot to mention our local expert, CS Vikas. Nikhil Gulati. So very sorry, I didn't recollect your name. So thank you, everyone. And with this, we hereby close today's session. Are we serving tea? Yes. All right. So let's join for a cup of tea. Thank you.